Hi everyone, welcome to my channel. There is a community group that I've created, and over there's a discussion that is going on that if we are from a non-psychology background and it has been like 3 or 4 or 5 years that we left a particular specialization that we were doing in our graduation, so should we shift to a psychology background field or not? This can be implemented for any other field as well. Should we switch our field if we have done something else in our graduation? Should we choose some other specialization for a master's or not? Now, before choosing a particular specialization, I will be specifically talking about psychology here, but you can understand it in other field area as well, because obviously more or less it's the same thing. Now, if you were from a non-psychology background and you have left the formal education, and it has already been 3-4 years or 5 years or more than that, and now you want to change it, then what should you keep in mind and how should you decide that yes, it is the right decision or not? So first, there are 3-4 things that you need to keep in mind. Firstly, why do you think that you are planning to change your specialization? Are you planning to change? You have to reflect on it, and that only you as an individual can do, right? I cannot give you a perfect answer, oh you should go for it or you should not go for it. It depends on a lot of factors that happens in an individual's life. Like my factors will be very different, and people who are watching this video, for individually every person it will be different. Why do you want to switch? First thing is, why do you want to switch your specialization or interest area? What has happened that is leading you, that is causing you to change your specialization? Second, do you think that are you planning to change your specialization because you think that mental health is the ongoing field and it will give you more interest, more income in comparison to the field that you're working in? Thirdly, do you feel that in your particular field which is currently जो भी आपकी है, जो जिसमें भी आपने ग्रेजुएशन की है, उसकी जो स्कोप है वो कम है, इसलिए आपको उसमें जॉब प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए आपको चेंज करनी है? फोर्थ फैक्टर कैन बी कि बिकॉज आपको लगता है कि मेंटल हेल्थ एरिया में ज़्यादा आप पैसे कमा सकते हो, इसीलिए आपको उसमें जाना चाहिए. और फिफ्थ फैक्टर कैन ऑल्सो भी कि आपका इंटरेस्ट एरिया है, आपने बहुत देयर आर पर्सनल रीजंस जो आपकी लाइफ में हुए हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि you want to explore more about this field area, and that is the reason that you want to invest your master's degree for this particular field only. Now once you have identified why, you need to understand the reality of this field as well. Me coming from the psychology background, even from a non-psychology background and then switching to a psychology one, can understand what you people are going through and can make you understand the challenges as well. So I at present have been in the psychology field considering my master's degree, because मेरी graduation में भी child psychology I've studied, but that was just a part of the whole education that I took BLED as my formal education. उसमें सिर्फ एक पार्ट था चाइल्ड साइकोलॉजी का, एजुकेशनल साइकोलॉजी का, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का, ये सब चीज़ें उसका सिर्फ एक पार्ट थी. मेजरली आई कैन नॉट से इट वाज अ साइकोलॉजी डिग्री, बट I would say like it has been around, if I calculate all these years as well as my education like master's ki, so 3 years that I have been in the psychology field, and I have identified certain challenges which a person need to understand before they go for selecting the specialization. Now first thing is, because it's a psychology field, the income and we all understand that psychology or mental health is not something that people usually talk about, और इट्स स्टिल वेरी ऑनगोइंग. तो आप समझ सकते हो कि ये सिर्फ एक इवॉल्विंग सेक्टर है, बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहा है, वो चीज़ है, बट ये स्टिल फाउंडेशन ईयर्स में है. तो यहाँ पर इनकम जो प्रॉस्पेक्ट्स है वो बहुत कम है. तो आई नो पीपल अराउंड मी जो कि साइकोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं सिंस द वेरी बिगिनिंग, लाइक 11th-12th से देव स्टडीड साइकोलॉजी, देन ग्रेजुएशन एंड देन PG ऑल्सो देव डन. But then also when it comes to an income, they are not able to get a satisfiable income. ये आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो इफ़ यू लुक एट द नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट जस्ट अ मिनट,
या सो जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस निकलती है उसमें भी अगर आप देखोगे कि जो भी मेंटल हेल्थ की फील्ड की जो भी पोस्ट निकलती है, दे विल ईदर पे लाइक अराउंड 10,000, 15, 20, 25, and at max it goes to 35, not more than that. And this is where I'm talking about the national mental health organizations or state की जो organizations है related to women or child or disability. But then also you understand, if the government feels that this is the certain salary that they are going to give, then just imagine the reality of the private sector. तो बहुत कम मिलती है, and I see people struggling a lot around me who are not able to get a desirable or even an average salary that a person needs to independently live in this 2022, right? एक certain amount of salary आपको चाहिए होती है, तो वो चीज़ की है. So you understand that there is a lot of problem in terms of even you do your masters from a good university, like Delhi University is a recognized university, but then also, and this I'm talking specifically about University of Delhi, although yes, even I know people from Christ University as well and from Amity University who face challenge to. या सो एट द सेम टाइम हमें ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है कि इफ़ अ पर्सन इज़ केपेबल इनफ एंड केपेबल नहीं बोलूँगी मैं यहाँ पे, आई वुड से कि काफ़ी बार ये भी होता है कि इफ़ यू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स देन यू आर एबल टू गेट much better salary than the average salary. Obviously there are always एक fixed range तो होती नहीं है, तो don't just get into कि मैं because I have said कि इतनी ही होती है salary तो इतनी ही होती है. That does not mean that. It is much more as well. And like initially बहुत struggling है field में रहना, but if you are able to learn lot तो हो जाता है and you are able to get a good salary as well. But then you can analyze your own self better than anyone in this world can. You know how much you'll be able to. Don't underestimate yourself further, क्योंकि काफ़ी बार मैंने देखा है, काफ़ी बार I have seen things around me that people underestimate them. So they have certain level of learning, but they always feel nahi, we are not that capable, we can't, I don't think we belong to the upper we have more knowledge, I would say, than the average people. तो वो चीज़ मैंने देखी है. But when you are analyzing about changing the field, then please don't underestimate yourself. Always think that why you feel that you'll be able to get a good salary in comparison to the others. That is one thing. Second thing is, if you're entering this field, be ready to invest. So there'll be in this field nothing you will get for free. So government की जो आई वुड से जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस बहुत कम है, लाइक 2,500 रुपये, एंड 900 या 1,000 रुपये आपकी हर बार जो सेमेस्टर फीस होती है फॉर एग्जाम्स वो ली जाएगी. अदरवाइज इट इज़ वेरी लेस, लाइक 2,500 फॉर द होल कोर्स, 2 साल के कोर्स के लिए 2,500 या 3,000 रुपये, लाइक समथिंग लाइक दैट, which will obviously depend, which will keep changing also. So the time when I'm making the video, at that time it is the fees is this. अब ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब आप इंटर्नशिप्स करते हो तो उस इंटर्नशिप में यू पे फॉर दोज इंटर्नशिप्स, और हर इंटर्नशिप 2,500 रुपये, 3,000 रुपये, दैट्स द मिनिमम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. उतने पैसे आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं पर इंटर्नशिप दैट यू आर डूइंग. दैट माइट बी फॉर 10 days, 1 month, एंड इट वेरीज. एंड काफ़ी बार ये भी होता है कि आप परफेक्ट इंटर्नशिप नहीं ढूंढ पाते हो, आपको लगता है नहीं, आपको नहीं समझ आता इनिशियली कि बीइंग इन दिस फील्ड किस तरह की इंटर्नशिप आपको करनी चाहिए और कहाँ से वो इंटर्नशिप मिलेगी. क्योंकि ये सारे चैलेंजेस मैंने भी फेस किए हैं, एंड ये सारे चैलेंजेस पीपल अराउंड मी from the psychology background have also faced this. So be ready for these kind of challenges as well, कि even when you enter the field तब भी आपको, because ये कोई एक structured field नहीं है, it is a ever evolving field and it is a very new field in terms of India, I would say, because India में आपको पता ही है कि अगर किसी को कोई, if someone is even struggling through some mental health problem, then that would be considered as black magic, काला जादू, instead of कि हाँ वो चीज़ कोई seriously कोई बीमारी हो सकती है. I would like share my example. Even me being educated enough
can also get, I also got trapped into this state. So let me share one example. So what happened, I had not like I did not take admission in psychology. इससे पहले की बात है, in 2018 I was somewhere else and I was sleeping one day, and I was not living with my family, I was living somewhere else and I was sleeping and my body freezed. My brain was perfectly working और मेरी बॉडी पूरी फ्रीज हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और मेरी आंखें खुली, नहीं सॉरी मेरी आईज भी बंद है, बट माई ब्रेन वॉज परफेक्टली वर्किंग, आई वॉज लाइक, और ये मैं एकदम से बीच में उठी हूँ, मतलब मैं सो गई थी एंड इट विल बी लाइक मिडनाइट और समथिंग, तो पूरा वो वाला फेज जो हमने आसपास सुना होता है कि वो भाई भूत होते हैं वो सब चीज़ें, एंड जिस पीजी में मैं सो रही थी उसका दरवाज़ा, हमने नेट वाला जो दरवाज़ा होता है जाली वाला वो लगाया हुआ था, अदरवाइज द डोर वॉज ओपन, और मेरे दरवाजे के बाहर ही एक जो बेरीज होती हैं उसका पेड़ था, तो पूरा फील है, आई एम स्कैर्ड ऑफ डार्कनेस, और मुझे ये सब चीज़ें बहुत डर लगता है, मैं आई डोंट लिसन टू दिस घोस्ट स्टोरीज एंड ऑल ऑल्सो, बिकॉज सी आई फील स्कैर्ड, इफ इट इज़ ट्रू और नॉट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आई फील स्कैर्ड. So there's something that happened, that my body is working and I was trying to, my brain was giving instructions that move your hand, move your body, move, take a turn, करवट लो, but I was not able to. मुझे ऐसा लग रहा था कि my body, there is a spirit in my body, I was feeling that, and because of that spirit I wasn't able to move. ठीक है, ये चीज़ मुझे लग रही थी. फिर आई वॉज एबल टू डू दैट, मतलब थोड़ा टाइम ऐसे रहा, कुछ सेकंड्स रहा, आई थिंक मिनट रहा होगा या सेकंड रहा होगा, इतना मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली आई वाज़न्ट कैलकुलेटिंग टाइम एट दैट टाइम, बट पूरा फ्रीज हो गई है बॉडी, मेरे माइंड का कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं ले रही है. अब फिर एकदम से ठीक हुआ, आई वॉज एबल टू मूव एंड देन आई लुक्ड एट द डोर एंड आफ्टर सम टाइम अगेन माई बॉडी फ्रीज, माई ब्रेन इज स्टिल गिविंग इंस्ट्रक्शंस और वो चीज़ नहीं हो रही है. और फिर आई हैड अ रूममेट हु वाज स्लीपिंग जस्ट नेक्स्ट टू मी, एंड जब वो सेकेंड टाइम हुआ मैंने अपनी रूममेट को उठाया और उसको भूत से डर नहीं लगता, तो आई वाज लाइक नेहा दिस हैज़ हैपेंड एंड आई वाज क्राइंग कि भाई पक्का नेहा ट्रस्ट मी इट वाज घोस्ट, यू हैव टू ट्रस्ट मी, यार मैं झूठ नहीं बोल रही, आई सेंस दैट आई हैड अ स्पिरिट इन माई बॉडी, आई एम नॉट लाइंग, मैं पूरा उसको पूरा बता रही हूँ, ठीक है. And this happened and then I was convinced तब तक कि it was a spirit and I am pretty sure that it was a spirit, and after that I felt scared, और मैं नेहा को बोलती थी नेहा कि हम दरवाज़ा बंद करके सो सकते हैं, तो वो हम आधा दरवाज़ा बंद करके सो, that happened for long time, like हो गए होंगे उसको 1 साल, and then someone posted on their WhatsApp status about sleep paralysis. And I read like what is sleep paralysis, what happens, and I was like, Kusum, you stupid brain, that was not ghost, that was, I was paralyzed in my sleep and that happened. So just imagine कि जब अगर मुझे समझ ही नहीं आता, अगर किसी ने उसके ऊपर रिसर्च ही नहीं की होती, तो मैं तो कन्विंस थी कि वो घोस्ट ही था. So sleep paralysis में क्या होता है, आपका ब्रेन फंक्शन करता है बट आपकी बॉडी पूरी फ्रीज रहती है एंड आपको नहीं समझ आता, आपका ब्रेन जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है आपकी बॉडी फॉलो नहीं कर पाती है. एंड दिस हैपन्स ड्यूरिंग लॉट ऑफ फटीग, स्ट्रेस और वो सब चीज़ों में हो जाता है. अब नाउ अगर मैंने वो चीज़ नहीं पढ़ी होती तो मैं हमेशा यही बिलीव करती हूँ, राइट. सो ऑल दीज थिंग्स, आई डोंट नो व्हाई आई वाज टेलिंग द स्टोरी, बट या ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक अगैन. आई completely forget why I was sharing this. Okay, I'm a storyteller. Okay. Now understand whatever decision that you take, okay, now you want to switch, and जो भी internships आपने करी है वो आपने कर लिया, फाइनलाइज कर लिया. then coming back again to the third factor is कि आपको ये चीज़ भी आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि if you are going into the field, are you going into the field because you want to be a therapist or because you want to go for research work. and अगर आपको दोनों चीज़ों का, so if you're going for research work, there will ample amount of opportunities that will be provided to you in the university, and काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगी from the teachers and the faculty as well. So when you're going there, ask them that I want to do research under you, can I help you, can I be with you for whatever research that you're doing, and tell them that you are interested again and again, and they won't feel कि आप उनको intervene कर रहे हो बार बार, क्योंकि that's how things work. And the other thing is, if you want to be a therapist, then identify कि what kind of therapies, what kind of mental health issues would you like
you would like to deal, and why are those interest areas important to you. प्लीज़ अंडरस्टैंड, ऑलवेज अंडरस्टैंड कि अगर आप चेंज कर रहे हो आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, बी रेडी फॉर बोथ द थिंग्स. यू मे लाइक इट, यू मे नॉट लाइक इट. So be ready and ask lot of people. Just don't consider my opinion. Ask lot of people from the same, no, non-psychology field only, and even from psychology field, that what are the challenges that they face. क्योंकि ये challenges मैंने face किए, might be किसी ने ना face किया, किसी के लिए वो journey बहुत easy रही हो. So always understand, asking for people's opinion. Watch lot of opinion oriented videos so that you understand things in a better way, where people have shared their experience, and try reaching out to people on LinkedIn or somewhere else so that it is a more helpful experience for you. I hope this helps you. Okay, bye. Thank you for watching my video.